Hello, Assalamu alaikum, and welcome to all my students from class 5th, 6th, and 7th. This video is for the guidance on how to write your answer sheets. Okay, students, so the video is actually explaining you that how you are going to write in your answer sheet of mathematics. Okay, students, and as well as some of the more information. So let's start. Students, this is an identity column provided to you on the main supplementary. Fine. So on this main supplementary, when you are going to start writing, you will first begin with this here margin. Over the margin, you will write your name. Suppose your name is Patel Farhan Saeed. So write it down very clearly with neat handwriting, readable handwriting. Now students, the column provide you the name of your school, that is Matliwala Public School, and below it where it is located. After the location, academic session is given to you. That means your this current year. Now as you know, our year begins with March and ends with the next year's March. So when this year begin, okay, and when this year from April it begins, right? So April's, that is 2020, it began, right? So you will write here in the space 2020, and your final examination will come in the next year's March month, right? So that next year will be now 21. So that's why we write 21, because we begin and we end are two different years. So the academic session is written in this manner. Now, which examination you are attempting? You are attempting term 1 examination. So you will write term 1 in the space given before the examination word. After that, student, you will write the date. Whatever date is there for maths paper, you will write that date of maths paper. On the maths question paper also you are being provided with the date. So what you are going to do, you will write that date, students. Okay, not only in my subject, in any other subject, whatever subject you are attempting, you are going to mention the date which is written on that question paper of that respective subject. Okay, student. Now let whatever subject you are writing the paper, definitely you will write that subject's respective name, right? So suppose you are writing maths paper, you are solving it, you are answering all the questions of mathematics question paper. So you will write mathematics in the space given against subject. Now, which class you belong to? Maybe you are from 5th class, so write 5th. Suppose you are not in 5th, you are in 6th, so write 6th. Now, suppose you are not in 6th, you are in 7th now, so write down 7th. So, whichever class you are in, write that class, okay, in Roman numbers, okay. Now, section. So if you are in B section, in D section, in C section, whatever section has been given to you, so that section you will write. As you know, A, B, C, D, E, F, like that, all sections are also there. So suppose you are in section B, so you write down B over it. Okay, students, now your roll number. Now, as you know, the school has already forwarded your name list according to your class. And with the name, the school has also given the roll number against that name. Yeah, that means your name. You have to write that particular roll number here in the column given. That is, suppose you are 27th roll number. So you will write 27 here.
Now students, the invigilator sign, as you know, when you are attempting examination in the school, this sign is actually done by the one who is supervising the class, right students? So no need to use this space because this is not for your use, it is for the official use. Examiner, the one who checked the paper. Okay student, the one who check your all answers, that subject teacher will do the signature here. So again, this space is not for you, it is only and only for official use. As well as this all grid, that is the marks obtained and maximum marks, will be the columns used for by the teachers, not by the students. So you have to leave the columns as well. Now let us move to the below paper of the identity column. Now after this, the supplementary starts blank. That means now you are going to fill the answers here. Now suppose for every 5th, 6th and 7th, your first question is choose the correct option. MCQs are there, right? That means one question is given and below that 4 options are given. A, B, C and D. Among this A, B, C, D, 3 are incorrect and only one is correct. So whatever correct option is there according to you, you are going to attempt that. That is, for one, suppose option C is right. Now write option C as well as the content of that C. दैट मीन्स सी कॉलम, सी ऑप्शन के अंदर जो भी आंसर आपने चुना है ना, आपने चॉइस किया है, आपको वो आंसर भी लिखना होगा दिस वे. Understood student? So you will write both the things. Now for suppose question number 2 and your option correct is A. So write the correct option along with the content of that option. Now for question 3. Suppose your question 3 is having a B option correct. So write B along with the content or answer of that B. Now suppose we'll go for 4 and there also you have the same option B only 4 correct for the fourth one. Option B is only the correct one for even the question number 4. It happens. In MCQs it happens, right? So you have to write that correct option with the content in it. And like that, you have to complete all your MCQs. That is multiple choice questions. Okay students, now for fill in the blanks. That will be your next question. For fill in the blanks, you have to attempt all the answers 1, 2, 3, 4 in a sequence. Sequence means line से लिखेगा, पहले 2 लिख दिया, फिर 10th लिख दिया, फिर 8th लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा. Okay, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever, and how many are there, that you have to attempt in a line. और अगर सपोज आपको कोई एकात नहीं आ रहा है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू लीव द स्पेस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर यू मे थिंक ओवर इट एंड देन राइट इट डाउन. Okay, but don't just leave it. Okay, you have to attempt, leave the space, think over it after your completion of paper and then write it down, but please write down in systematic order way. Okay, after fill in the blanks, the next question for you is true or false. So what you are going to do for true or false? Obviously you are going to mention the first heading, question number 3, true or false, and then you will begin with 1, 2, 3, 4. These questions also you have to attempt in a sequence. आप लाइन से इनको attempt कीजिएगा. जो नहीं आता उसकी से स्पेस छोड़ दीजिए. जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तब आप उन छोड़े हुए क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ें, उसके ऊपर सोचें, याद करें और फिर उसको लिखें. ठीक है? सो फॉर ट्रू और फॉल्स ऑल्सो यू अटेम्प्ट ऑल द आंसर्स इन अ सीक्वेंस. और आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिखना है, ना फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चंस कॉपी करने हैं, ना ट्रू और फॉल्स में आपको क्वेश्चन कॉपी करने हैं, और ना मैच द पेयर में. डायरेक्ट आंसर्स लिखिएगा.
ओके, नाउ सपोज हम मैच द कॉलम की बात करें, तो मैच द पेयर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन के सामने आंसर्स कॉपी कर लेते हैं। ओके, ओके फाइन, चलता है। लेकिन कितने बच्चों ने क्या किया है आपको पता है? हमेशा क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस लाइंस ड्रॉ करके मैच करते हैं। Now you are in 5th standard, 6th standard, 7th standard, right? Don't draw the crisscross lines for matching the pair in match the columns. How you going to attempt? See, you will attempt like this. Suppose your question 1 is having the correct answer in number C. So you will write like this, 1 hyphen C. यानी 1 का correct match कहाँ है? C में है. The second one is having the correct match in A. So you will write 2 hyphen A. Third is having the correct match in B. So write down 3 space B. And fourth one is having the correct match in D. So write down D. यहाँ पर कोई भी लेटर डबल टाइम नहीं आ सकता क्योंकि मैच द पेयर में एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बार होता है। हाँ, एक्स्ट्रा आंसर्स दिए जाते हैं बट उनमें कोई रॉन्ग भी होते हैं। सो यू हैव, वो तो हमें अटेम्प्ट करने ही नहीं होते, राइट? हमें करेक्ट मैच करना होता है, तो एक लेटर एक ही के सामने आता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर पेपर। उसके बाद में जो सोल्यूशंस हैं आप फिर स्टार्ट कीजिएगा, करेक्ट? और आप स्टार्ट ऐसा करें कि आप जितने भी नंबर स्टोरीज हैं, है ना, वो नंबर स्टोरीज में स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, वो मैंडेटरी होता है बेटा, कंपलसरीज होते हैं, वो आपको स्टेटमेंट में आंसर देने होते हैं, मेथड बतानी होती है, मेथड के मार्क्स होते हैं, राइट? कैलकुलेशन वर्क भी आप क्या कर सकते हैं पता है? सपोज कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, सो यू मे ड्रॉ वन थिन वर्टिकल लाइन हियर at the right side corner of the page and you may do your rough work here if you want. This is one method. अगर आपको क्वेश्चन पेपर के इसी तरफ नहीं, आई मीन सॉरी, आंसर शीट के इस तरफ आपको रफ वर्क नहीं करना, so you may do what, you know, back side of the page, the last page of your supplementary, you may use to do the rough work. Okay students, now suppose you have attempted all your answers but still some of the questions are left और आपके पास सप्लीमेंट्री है नहीं, मेन सप्लीमेंट्री आपको 1 दी गई है, अब आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्रीज आप, आपके पास जो कोई बुक पड़ी हो ना रफ, जिसके अंदर पेजेस हैं, उसको प्रॉपरली नीटली पुल कीजिएगा, उसको अच्छे से निकालिएगा बुक से, ताकि ना आपकी बुक खराब हो और ना पेज फटे, ठीक है? आप अच्छे से उसे निकालिएगा और आपके पास के पेपर्स को ही आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री की तरह यूज कीजिएगा। और मेन सप्लीमेंट्री के बैक साइड में जिस तरीके से आप स्कूल में थ्रेड बांध के अटैच करते हैं, अगर आपके पास थ्रेड नहीं है तो आप उसको स्टेपलर कर दीजिएगा। फाइन। सो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्रीज आपकी तरफ से ही लगानी होगी, ठीक है? आपके पास से ब्लैंक पेजेस में आपको सॉल्व करके फिर आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्रीज यहाँ आपके मेन सप्लीमेंट्री के बैक साइड में अटैच करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। My all good wishes to you, my all students. Instead of stressing out and jinxing yourself for the worst, बहुत ज़्यादा पजल नहीं हो जाएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम कामली अपना पेपर दीजिएगा, है ना? अच्छे से लिखिएगा, नीट हैंड राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग में। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडिंग एंड फोकसिंग, स्टडिंग हार्ड, है ना? अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए एंड बीटिंग एवरीवन टू कम फर्स्ट। बिल्कुल, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है एंड डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गर यू विल बी इन लर्निंग, in doing the hard works behind studies, definitely you are going to come first in the class. All my good luck and good wishes to you students. So thank you for watching the video. We are going to meet soon with another video. Till then, goodbye and all the best.